हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सीबीएसई क्लास 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स की स्टडी कर रहे हैं। इन आवर प्रीवियस वीडियोस वी लर्न अबाउट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज द थेस थ्योरम, द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, and we learn to solve some questions based on them. Now in this video also we'll continue the same topic, that is similarity of triangles. We'll learn some conditions for similarity of triangles through which we can prove the two triangles similar. First is AAA similarity. AAA stands for angle, angle, angle. If in two triangles corresponding angles are equal, then the two triangles are similar. ये क्राइटेरिया क्या है? इसमें अगर दो ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। We have two triangles, one triangle ABC and triangle PQR. If angle A of triangle ABC is equal to angle P of triangle PQR, angle B of triangle ABC is equal to angle Q of triangle PQR, angle C of triangle ABC is equal to angle R of triangle PQR, then we can say that triangle ABC is similar to triangle. We have to write the correct order of similarity. See, we write 1, 2, 3. Here also 1, 2, 3. We see angle A equals angle P. Here angle A is at the first place. So here at the first place we will write P. Here B is at the second place and we have B equals Q. So here at the second place we will write Q. Angle C equals angle R. Here C is at the third place and here at the third place we have to write R. So triangle ABC is similar to triangle PQR, and the reason because they are similar by AAA similarity. Now we can see AA similarity through this figure. Now in triangle ABC and triangle PQR, if angle A equals angle Q, angle B equals angle P, and angle C equals angle R, then we can say that triangle ABC is similar to triangle 1, 2, 3, 1, 2, 3. Angle A equals angle Q. Here A is at the first place, so here at the first place there will be Q. Angle B equals angle P. Here B is at the second place, so here P will be at the second place. Angle C equals angle R. Here C is at the third place, so at the third place there will be R.
So we have triangle ABC similar to triangle QPR by A similarity. Now we have one more similarity, that is AA similarity. AA similarity means angle similarity. If two angles of one triangle are respectively equal to two angles of another triangle, then the two triangles are similar. इस सिमिलरिटी क्या है? अगर टू ट्रायंगल्स में उनके टू एंगल्स आपस में इक्वल हैं, then also we can say that the triangles are similar. We have triangle ABC and triangle PQR. If angle A of triangle ABC equals angle P of triangle PQR, and angle B of triangle ABC is equal to angle Q of triangle PQR, then we can say that triangle ABC is similar to triangle 1, 2, 3, 1, 2, 3. A equals P, here A is at the first place, so here at the first place there will be P. B equals Q, so B is at the second place and Q will be at the second place. The remaining letter R will come at the remaining place. So we have triangle ABC similar to triangle PQR by AA similarity. Now we have triangle ABC and triangle PQR. If angle A of triangle ABC is equal to angle R of triangle PQR, angle C of triangle ABC is equal to angle Q of triangle PQR, then triangle ABC is similar to triangle 1, 2, 3, 1, 2, 3. Here A equals R. A is at the first place, so R will be at the first place. C equals Q. C is at the third place, so Q will be at the third place. The remaining letter P will come at the remaining place. So we have triangle ABC similar to triangle RPQ by AA similarity. We have one more similarity criterion, that is SSS similarity. SSS stands for side, side, side. If in two triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of the other triangle, then the two triangles are similar. इसमें क्या है, इस सिमिलरिटी में क्या है, टू ट्रायंगल्स में अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, दैट इज
the sides are proportional, then we say that the triangles are similar. See, triangle ABC and triangle PQR. If AB upon PQ equals BC upon QR equals AC upon PR, then triangle ABC is similar to triangle 1, 2, 3. 1, 2, 3. Now you see, we have AB upon PQ equals BC upon QR. See, in the numerators we have B common. दोनों के न्यूमरेटर में अगर हम देखें तो दोनों में क्या है B. दोनों के डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है Q. It means B equals Q. So B is here at the second place. So here at the second place we write Q. Now you see, B equals Q, then A equals P. तो B के प्लेस पर Q आया है, तो A के प्लेस पर क्या आएगा P. A फर्स्ट प्लेस पर है, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर क्या होगा P. Now we have the third letter R that can come at the remaining place third. Otherwise you can see when B equals Q, then C equals R. So C equals R. This is by S, S, S. Another case we can see, if AB upon QR equals BC upon PQ equals AC upon PR. ऐसे भी हो सकता है, कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा ABC और PQR ही सिमिलर आए, है ना. ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स हम देखेंगे. हियर वी हैव AB अपॉन QR इक्वल्स BC अपॉन PQ. फर्स्ट वी राइट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल 1, 2, 3. In the numerators you see B is common. यहाँ ये दोनों के न्यूमरेटर में B है और यहाँ दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है Q. In place of B we write Q. B की जगह पर Q तो A की जगह पर R. In place of A you write R. The remaining letter P will come at the remaining place, that is the third place. Or you can compare here also. When B equals Q, then C equals P. So C equals P. This is by S, S, S similarity, that is side, side, side similarity. Now we have one more similarity criterion, that is SAS similarity. SAS stands for side, side, side similarity. See, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. The two triangles are similar. Okay. See, we have triangle ABC and triangle DEF now. If AB upon DE equals AC upon DF and
एंगल ए इक्वल्स एंगल डी। देखिए इस सिमिलरिटी में क्या कंपलसरी है, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ दोनों रेशियो इक्वल है। एंड द एंगल इंक्लूडिंग दीज साइड्स, जिन दो साइड्स का रेशियो आपने लिखा है उसी के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। इन दोनों के बीच में ए आ रहा है और इन दोनों के बीच में डी आ रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। देन ओनली यू कैन से द ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, प्रॉपर नेम इसका देना है सही ऑर्डर के अकॉर्डिंग। A equals D, A is at the first place, so D will be at the first place. Here you see A equals D, then B equals E. B is at the second place, so E will be at the second place. A equals D, then C equals F. And this is by SAS similarity. Now, we have triangle ABC and triangle DEF. If AB upon EF equals BC upon DF and, अब देखो कौन सा एंगल इन साइड्स के बीच में आ रहा है। आपने इसमें ए बी लिया है और यहाँ डी ए बी अपॉन ए बी देन ई एफ, ए बी अपॉन ई एफ। सेकेंड साइड इस ट्रायंगल के हमने क्या लिए बी सी और इसके क्या लिए डी एफ। तो यहाँ पे ए बी और बी सी टू साइड्स हमने लिए हैं, एंगल आएगा इसमें इंक्लूडिंग एंगल इज बी। यहाँ हमने ई एफ और डी एफ, ई एफ एंड डी एफ, सो इंक्लूडिंग एंगल इज एफ। Angle B equals angle F. Then triangle ABC is similar to 1, 2, 3, 1, 2, 3. See, angle B equals angle F. B is at the second place, so F is at the second place. Angle B equals angle F, so A equals E. In place of A, there is E. Now remaining letter D will come at the remaining place, or you can see here also, if angle B equals angle F, then C equals D. C is at the third place, so D is at the third place, and this is by SAS similarity. Okay, that's all for this video. We will continue the same topic, that is similarity of triangles, in our next video also. We'll learn some problems based on criteria of similarity of triangles. You can find this matter in the form of the PDF which is attached in the description box. Thank you.